हेलो फ्रेंड्स मु देवी प्रसाद आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर यूट्यूब चैनल बीएस स्मार्ट एकेडमी को। तो फ्रेंड्स आज आम फिजिकल एजुकेशन टीचर पर जो पोस्ट आसी 2020-22 तो तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा 2020 आउ 2021 सेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तार आम सेक्शन 1 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो 30टा क्वेश्चन 30टा क्वेश्चन तुम आसूची फिजिकल एजुकेशन टीचर रे तो से विषय में तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एबे हमें डिस्कशन करवा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एटी तुमको एग्जाम रे बोथ ओडिया और इंग्लिश से दे जाइथो तो जोटा तुमको सुइटेबल से आपण आंसर दे परिबे। तो प्रथम प्रश्न पढ़िबा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आई मॉइस्ट deciduous and dry the deciduous forest are two major classifications of tropical deciduous forest found in India. Statement 2 the dominant trees of the deciduous forest includes teak, sandalwood, sisam, mohua, sal and bamboo। तो दीटा स्टेटमेंट आमको दिगला भर पचार जे कौटा करेक्ट आ कौटा फॉल्स। तो ओडिया यदि आम पढ़ा तो दिखाई निम्नलिखित विवृत्ति गुड़िक पढ़ंतु एवं सठिक विकल्प बाछंतु। आर्द्र पर्णमोची एवं शुष्क पर्णमोची हेउची भारत में मिलुवा ग्रीष्ममंडलीय पर्णमोची जंगल दुईटी प्रमुख वर्गीकरण। ऑप्शन 2 रे देछि बा स्टेटमेंट 2 रे देछि पर्णमोची जंगल से पर्णमोची हवा कथा भूल पत्रमोची दिखाई। तो पर्णमोची जंगल प्रभावशाली गछ गुड़िक मध्य सागवान, चंदन, शीशम, महुआ, शाल और बाउंश अंतर्भुक्त। तो क्यों आंसर टी करेक्ट। ऑप्शन ए देला आई फॉल्स 2 आई फॉल्स। ऑप्शन बी देला आई ट्रू 2 आई ट्रू। ऑप्शन सी आई ट्रू 2 आई फॉल्स। ऑप्शन डी आई फॉल्स 2 आई हैला ट्रू। तो 1 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी आई ट्रू एवं 2 आई मध्य ट्रू। तो अबे देखिबा 1 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर में जानले कोन ना ऑप्शन बी। एबे देखिए हमर सेकंड क्वेश्चन। जीपीएस इज द acronym for technology used in mobile phones for locating a destination while traveling। GPS stands for ताने GPS रो कोन पचाची ना पूरा नाम कोन बा फुल फॉर्म कोन एठी पचारिची। ऑप्शन देला ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑप्शन बी जियोलॉजिकल प्रोजेक्टिंग सिस्टम जियोलॉजिकल प्रोजेक्शन सिस्टम। ऑप्शन सी जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो 2 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची बा जीपीएस रो फुल फॉर्म होची ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एबे देखिया 3 नंबर प्रश्न। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन ए डिटेल्ड क्राइटेरिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन दिस कॉन्टेस्ट। ऑप्शन ए द पार्टी शुड हैव कंडक्टेड 15 पब्लिक मीटिंग्स विथ एटलीस्ट 3 लाख पीपल असेंबल्ड फॉर ईच मीटिंग एंड ओन एटलीस्ट 2 legislative assembly seats at a general election, 2 Lok Sabha or legislative assembly। Option B देला the party should have owned at least 1 seat in 40% of the gram panchayats, 10 municipal councils and at least 2 municipal corporations of the state। Option C देखिबा the party should have polled minimum of 6% of votes in a state and must has owned 1 Lok Sabha or 2 legislative assembly seats at a general election to Lok Sabha or legislative assembly। Option D the party should have owned at least 30% of the total number of seats in the legislative assembly of the state and secure more than 20 seats in the general elections। तो 3 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हला ऑप्शन सी। तो दिया आइची देखो ना the party should have polled minimum of 6% of votes in a state and must has owned 1 Lok Sabha or 2 legislative assembly seats at a general election to Lok Sabha or legislative assembly। एबे देखिबा 4 नंबर प्रश्न। with reference to a world geography what are Alps, Pyrenees, Apennines and Balkans। विश्व भूगोल संदर्भ रे आल्प्स, पाइरेनीस, Apennines and Balkan कौन। ऑप्शन ए द टीनी आइसलैंड इन द अटलांटिक ओशन। ऑप्शन बी द रिवर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन सी द रेन फॉरेस्ट इन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी द माउंटेन्स इन यूरोप। तो 4 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन डी
द माउंटेन्स ऑफ यूरोप। एबे देखिबा 5 नंबर प्रश्न रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो वाक्य दिया है तो एमान भितर क्यों वाक्य सठिक अच्छी ऑप्शन पढ़ा इंग्लिश रे पढ़ी पारे बा ओडिया रे पढ़ी पारे। मुझे ओडिया रे पढ़ुची 2022 रे अंतर्जातीय विमान बंदर परिषद बा एएसआई रा फुल फॉर्म कौन एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल अनुजाई अंगारकाम्ल निर्गमन ह्रास 7टी भारतीय विमान बंदर आंतर्जातिक स्वीकृति पाई। एटा प्रथम स्टेटमेंट एवं सेकेंड स्टेटमेंट देछि बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर भुवनेश्वर मध्य यार अंश अटे जे कि अंगारकाम्ल निर्गमन ह्रास जो अंतर्जातीय मान्यता प्राप्त करिछि। तो ये जो दुईटी स्टेटमेंट देला ऑप्शन ए देला ऑप्शन आई देला बा स्टेटमेंट फर्स्ट हैला फॉल्स सेकंड हैला फॉल्स। ऑप्शन बी देला फर्स्ट ट्रू सेकंड बी फॉल्स। ऑप्शन सी फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। ऑप्शन डी फर्स्ट ट्रू सेकंड बी ट्रू। तो 5 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी स्टेटमेंट फर्स्ट टा होची कोन ना भूल एवं सेकंड टा होची ठीक। तो ऑप्शन सी होची 5 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर। एबे देखियो 6 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन सिलेक्टेड एज द वेन्यू फॉर द 2023 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए कटक पुरी। ऑप्शन बी भुवनेश्वर एंड राउरकेला। ऑप्शन सी संबलपुर एंड पारादीप। ऑप्शन डी बारिपदा एंड बालेश्वर। तो 6 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी भुवनेश्वर एंड राउरकेला। एबे देखिबा 7 नंबर प्रश्न द डॉल्फिन सेंसस वाज कंडक्टेड एट द गहिरमथा मेराइन सैंक्चुरी इन द ईयर 2020। गहिरमथा मेराइन सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। तो गहिरमथा को डिस्ट्रिक्ट रे अछि बा को जिल्ला रो अंतर्गत। ऑप्शन ए कलाहांडी। ऑप्शन बी केंद्रापड़ा। ऑप्शन सी सुंदरगढ़। ऑप्शन डी नवरंगपुर। तो 7 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी केंद्रापड़ा। एबे देखिबा 8 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शंस पर्टेनिंग टू 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs enlisted by United Nations in the year 2000। ऑप्शन ए दिला डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ऑप्शन बी एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन सी प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू ऑल। ऑप्शन डी कॉम्बैट HIV और एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। तो 8 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू ऑल समस्त को सुलभ एवं स्वच्छ शक्ति प्रदान करवा। एबे देखिबा 9 नंबर प्रश्न इन 2013 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to reduce the inequality in distribution of medical facilities of the country and provide accessibility, affordable and quality health care to the rural population of the country। Option A National Rural Health Mission। Option B Urban Rural Health Scheme। Option C राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन डी कनेक्टिंग रूरल हेल्थ टू अर्बन फैसिलिटीज स्कीम। तो 9 नंबर प्रश्न राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बा जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। एबे देखिबा 10 नंबर प्रश्न रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो दुईटा स्टेटमेंट दिया है तो ए दुईटा मध्य को ऑप्शन टा करेक्ट आ को ऑप्शन टा करेक्ट नुहे तो ताको फाइंड आउट करियर अछि। स्टेटमेंट दिया पढ़ी देबा टोपोग्राफी ऑफ ए रीजन कैन नेवर बी ए कांस्टेंट इन इट्स डेवलपमेंट। Statement 2 literacy is considered to be a major indicators of socio-economic development। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स। ऑप्शन बी है फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू। ऑप्शन सी है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ऑप्शन डी फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। तो 10 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन डी फर्स्ट स्टेटमेंट कौन अच्छी ना फॉल्स अच्छी और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू अच्छी। एबे देखिए 11 नंबर प्रश्न The Human Development Index by HDI is a statistical measure developed by the United Nations to assess the social and economic development of countries around the world. Which of the following is an incorrect option with reference to 3 basic aspects of HDI Human Development Index? Option A
Standard of living measured by GNI per capita. Option B, healthy life measured by life expectancy at birth. Option C, purchasing power measured by individual wealth. Option D, access to knowledge measured by education. तो 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी, purchasing power measured by individual wealth. एबे देखिए 12 नंबर प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिरा स्टेटमेंट दिया है ता मध्यरु हमको कोटा करेक्ट और कोटा करेक्ट नुहे तक फाइंड आउट करबा पड़िबो. मो ओडिया स्टेटमेंट दिरा पढुची. ओडिशार बाजीराउत को 12 वर्ष बयस हत्या कराइथिबा सर्वकनिष्ठ भारतीय स्वाधीनता संग्रामी एवं शहीद भाव में विवेचना करा जाए. एवं स्टेटमेंट 2 होची, बाजीराउत को ब्रिटिश पुलिस गुली करथिला जेतेबेले से सेमानकु नीलकंठपुर घाटरे ब्राह्मणी नदी पार करिया को मना कर देथिले. तो ये दुईटी स्टेटमेंट मध्य कोटा ठीक और कोटा भूल आमको फाइंड आउट करार अच्छी. तो 12 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी. ने फास्ट स्टेटमेंटा कौन अच्छी ना ठीक अच्छी, स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंटा भी मध्य कौन अच्छी ना ठीक अच्छी. एबे देखिए 13 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्टेड बिलो इज आर ट्रू with reference to the measure adopted by the government of India for universalization of elementary education in the country. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देला, implementation of national policy on education 1986 that envisages free and compulsory education to all children up to the age of 14. Statement 2, insertion of article 21A as a fundamental right by the Constitution 86th Amendment Act 2002 to provide free and compulsory education of all children in the age of group 6 to 14 years. Statement 3, introduction of Sarva Shiksha Abhijan SSA in 2001-2 session for providing free and compulsory education to all children falling in the age group of 6 to 14 years. तो ऑप्शन देला ऑल आई 2i 3i होची करेक्ट बा ट्रू. ऑप्शन बी देला ओनली 3i हैला ट्रू. ऑप्शन सी देला ओनली 2i ट्रू. ऑप्शन डी ओनली 1 एंड 2i ट्रू. तो 13 नंबर प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन ए, ऑल 1 2 और 3 आर कोन ना करेक्ट. एबे देखिबा 14 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए tributary of the river Yamuna. Option A, Tendoni. Option B, Chambal. Option C, Hiran. Option D, Ursang. तो 14 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी, चंबल. एबे देखिए 15 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फैक्ट्स रिलेटेड टू सन फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो. ऑप्शन ए, द टाइम टेकन बाय for the sun's light to reach earth is approximately 8 minutes and 19 seconds. Option B, the diameter of the sun is 100 times more than that of the earth. Option C, the distance of the sun from earth is nearly 75 million kilometers. Option D, the temperature of the sun is 15 million degrees Celsius at the surface and 6000 degrees Celsius in the core. तो 15 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन ए, the time taken by for the sun's light to reach earth is approximately 8 minutes and 19 seconds. एबे देखिए 16 नंबर प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2020 इन द ओकेजन ऑफ ओडिशा डे. Statement 2, under Malati Devi Prak Vidyalaya Paridhana Yojana 2 sets of uniform are provided for free to preschool children in Anganwadi centers. तो 16 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी. फर्स्ट स्टेटमेंट कौन ना फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट कौन अच्छी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी और सेकंड स्टेटमेंट कौन अच्छी ना ट्रू अच्छी. एबे देखिए 17 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एलईडी बल्ब्स. तो निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्य केउंटी एलईडी बल्ब संदर्भ में सठिक अटे. ऑप्शन ए, इट इज लाइट सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास एनवल्व विथ फिलामेंट ऑफ टंगस्टन वायर.
Option B, it is a light source based on optical fibers. Option C, it is a light source based on semiconductors. Option D, it is a light source of consisting of glass tube filled with argon gas. So 17 number question right answer है option C, it is a light source based on semiconductors. एबे देखिए 18 नंबर प्रश्न, read the following statements and choose the correct options. Statement 1, the Constitution of India came into force on 26 January. Statement 2, the Constitution of India contained 496 articles and 12 schedules at the time of its adoption. तो 18 नंबर प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन सी, जोटा कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन अच्छी ना ट्रू अच्छी और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी. एबे देखिए 19 नंबर प्रश्न, इन 1827 from which place did the people under the leadership of Samant Madhav Chandra Samantraay rebelled against the oppressive rule of the British. तो 1987 केउं स्थान सामंत माधव चंद्र सामंतराय का नेतृत्व लोक मैंने ब्रिटिश मान अत्याचारी शासन विरुद्ध विद्रोह करते. ऑप्शन ए तापंगड़, ऑप्शन बी सुवर्णपुर, ऑप्शन सी नुआपड़ा, ऑप्शन डी बलांगीर. तो 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो ऑप्शन ए तापंगड़. एबे देखिबा 20 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर विथ रेस्पेक्ट टू द बायोस्फीयर रिजर्व एंड द स्टेट इन व्हिच दे आर फाउंड इन इंडिया. ऑप्शन ए नंदा देविका बायोस्फीयर रिजर्व महाराष्ट्र, नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, दाइहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश. तो कौ जोड़ीटा कौन अच्छी ना इनकरेक्ट अच्छी आमको फाइंड आउट करिया पड़िबो. ऑप्शन ए होची तार राइट आंसर, जोटा कि नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व कोठी अछि ना महाराष्ट्र रे. ऑप्शन ए होची करेक्ट 20 नंबर प्रश्न रो. एबे देखिए 21 नंबर प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ऑप्शन 2 बा स्टेटमेंट 2 वाला लेजर लिक्विड इज इन जनरल polychromatic, that is it contains multiple frequencies of light. Option A first are true, second are false. Option B first are false, second are false. Option C first are false, second are true. Option D true आउ true. तो 21 नंबर प्रश्न राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक अच्छी आउ सेकंड स्टेटमेंट कौन अच्छी ना भूल अच्छी. एबे देखिबा 22 नंबर प्रश्न, Who among the following was the founder of the Utkal Heteisin Samaj of Parana Khemundi? Option A Fakirmon Senapati, option B Samsundar Rajguru, option D Govemmental Misra, option D Vaikuntanath Pujari. तो 22 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी श्यामसुंदर राजगुरु. एबे देखियो 23 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ carbohydrates. Option A maltose, option B monosaccharides, option C polysaccharides, option D cellulose. तो 23 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी मोनोसैकेराइड. एबे देखिए 24 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट pattern that describes the unusual warming of surface winter waters in the eastern equatorial Pacific Ocean. Option A continental drift, option B jet stream, option C La Nina, option D El Nino. तो 24 नंबर प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन डी एल निनो. एबे देखिबा 25 नंबर प्रश्न, इन 2020 Indian Railways set up the country's first governmental waste to energy plant in which of the following cities of Odisha? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी कटक. तो 25 नंबर प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन ए भुवनेश्वर. एबे देखिबा 26 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू elections of members of the Rajya Sabha? Option A the representatives of each state are elected by the elected members of the legislative assembly of their state.
Option B, the represent activities of union territories are elected by the members of the electoral college for the union territory. Option C, the members are elected in accordance to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. Option D, the members of Rajya Sabha are elected for the term of 4 years and 1/4 members get retired after. तो 26 नंबर प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन डी. तो एबे देखिए 27 नंबर प्रश्न. In 1923 Prajatantra, a weekly publication was started by which of the following freedom fighters of India? Option A, Godabarish Misra. Option B, Harikrishna Mahatab. Option C, Niranjan Patnaik. Option D, Radhanaranjan Das. 27 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी, हरे कृष्ण महताब. कौन तैयार करथिले ना प्रजातंत्र नामक प्रकाशन आरंभ करथिले. एबे देखिबा 28 नंबर प्रश्न. हु एमंग द फॉलोइंग ओडिया वुमेन वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शन ए, रामदेवी. ऑप्शन बी, लक्ष्मी पंडा. ऑप्शन सी, मालती चौधरी. ऑप्शन डी, प्रभाती देवी. तो 28 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी, लक्ष्मी पंडा. ऑप्शन बी, लक्ष्मी पंडा. एबे देखिए 28 नंबर प्रश्न गला. 29 नंबर प्रश्न देखिया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द राइट टू मूव द सुपरमेसी कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द fundamental rights. Option B, the rights to have property for an individual as per the provisions made in the fundamental rights. Option C, the rights that can be suspended during the operation of a national emergency in the country. अब देखिए ऑप्शन डी, the laws that are incorrect statement by inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. ऑप्शन ए ओडिया पढ़ले हम भारतीय संविधान धारा 13 अनुसार निम्नलिखित मध्य केउं व्यवस्था प्रदान करा जाई अछि? तो 29 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, कोनोसी मौलिक अधिकार सहित असंगत कि अवमानना करथुवा आईन गुडी को शून्य हेबो नाही. एबे हला 29 नंबर प्रश्न गला. एबे देखा 30 नंबर प्रश्न. Which of the following options refer to a procedures introduced in the parliamentary to draw attention of the house to a definite matter of urgent public importance and needs the support of 50 members to be admitted? Option A, ancillary motion. Option B, closure motion. Option C, superseding motion. Option D, adjournment motion. तबे देखिए 30 नंबर प्रश्न राइट आंसर कौन ना ऑप्शन डी, adjournment मोशन बा स्थगन प्रक्रिया बा स्थगन प्रस्ताव. तो 30 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन डी, adjournment मोशन और स्थगन प्रस्ताव. तो फ्रेंड्स एटी सरी जाइए आमर फिजिकल एजुकेशन टीचर रो सेक्शन 1 जो थी कि आम पढ़िले जनरल करंट अफेयर एवं जीके. तो जदि फ्रेंड्स आज MCQ सीरीज आपण मानक भल लगी थाए ताले आम चैनल बीएस स्मार्ट एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु एवं आम सहित जोड़ी रही आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु. धन्यवाद.